extra time. Muchiba, how frustrating is it to potentially let England back into the game after a day and a half of dominating the English side, and then maybe a few soft dismissals allowing them to creep back into the game? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We're not frustrated, but obviously, like with the passage of time, it's been a while actually we played the test cricket. So the guys are getting that momentum actually. But like we are very confident, inshallah. 244, we got the lead at the moment, I believe. And I think if we can get another 20, 30 runs, so like it will be a very good score on that pitch. If we bowl well, if we field well, I think it will be a very good test match. Just wanted your thoughts on this surface and the threat of your leg spinners. I mean, clearly it's taking a bit of turn out there already. We saw with Best, and we saw that Yasir and Shadab, picked up the last 5 wickets pretty confidently in the first innings. Do you think that everything is set up for them to push you home to victory here? Yeah, no, look, they've been, Yasir and Shadab obviously hardly played cricket for last 5-6 months now. But, the way of the ball in first innings, like as you said, I think they got the momentum now and they got the pitch, understanding about the pitch now, what pace you have to bowl and what field position you have to, specific batsman, specific field position you have to have. And I think they're very confident in the way of the ball, actually, Yasir especially, he started with the nerves, but, obviously we can understand that. But I think, overall, both spinners bowl very well last session for when we bowled actually, and we are confident about if they can bowl well on good targets. I think they can be lethal there, inshallah. क्रेडिट देना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि क्लियर हेडेड थे, क्लियर थॉट्स थी कि 8-10 दिन से सुनने में आ रहा था कि 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, तो कितना अच्छा होता है क्लियर इन थॉट्स होना, और कितना मुश्किल था कि इंग्लैंड में लोग कहते हैं कि 2 स्पिनर, वो भी दोनों लेग स्पिनर, कितना मुश्किल डिसीजन था। नहीं, देखें, आपने जैसे बात की है, मिसबा इस बार में बहुत क्लियर था, मिसबा नजर ऑब्वियसली हमारी साहब की राय मशवरे के साथ बात हो रही थी। जो हमने पहले दिन आके पिच देखी और जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच देखा, उसमें हमें अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन जो बनाना था टीम का, तो शदाब बिकम अ वेरी गुड ऑलराउंडर। नाउ आपकी उसने पहली इनिंग्स में बैटिंग जो की, वही एक जो पार्टनरशिप थी शदाब की और शान की, वो हमें 326 रन पे लेके गई। तो अभी ये शदाब की जो भी अभी इसने बॉलिंग भी की है, जो आखिरी 4 बैट्समैन होते हैं, टेल एंडर्स होते हैं, उसका गुगली बहुत अच्छा होता है और उसकी गेंद में जान भी ज्यादा है। तो आई थिंक उस दैट पिच के ऊपर हम बहुत मेंटली क्लियर थे कि हमने इस कॉम्बिनेशन में जाना है। एंड आई थिंक एज अ सेट लाइक मिसबा और वो अजहर इस मामले में बड़े क्लियर थे। Can you tell me, we saw Yasir bowling really well after a long time. He looked like the old Yasir when he was bowling the UAE and taking wickets. What specifically what areas have you worked with him on this tour so far? Him and the other spinners, Shadab and Kashif Bhatti. What have you really told them? I think the most important thing, like mentally, like you got to understand the mental approach of spinners. Like they got to have a strong temperament. So if you have a strong temperament and you understand your action, and I believe that, like technical things, you got to have a repeatable action to bowl good overs rather than good balls. So I think that is for 3 weeks, 4 weeks, we've been working on his action. And obviously, making some strategies and, tactical things, we are developing that into his muscle memory, which is he already got that. So I think, from my point of view, you got to build a relationship with your fellow spinners, and also, just let them know, how you can win games. So coming back to your question, you got to bowl good overs, and if you have a variation, you got a wrong on leg break and flippers, and if you bowl good overs, I think you can challenge any batsman. ऐसे देखते हैं जो विकेट का बिहेवियर इस वक्त आप देख रहे हैं, वो समझते हैं कि आखिरी जो बैटिंग जब इंग्लैंड की होगी तो वो हमारे बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगी। देखिए, जिस तरह की पहली इनिंग्स में हमारी बॉलिंग ने की है, स्पेशली फास्ट बॉलर ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की है, और डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे अगर हम दोबारा बॉलिंग करेंगे, क्योंकि पिच में थोड़ा सा वेट टेयर हुआ है, स्पिन पहले दिन से ही हो रहा था, अब स्पिन और अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। अगर हमने बॉलिंग अच्छी की, कैचेस अपने अच्छे किए, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंट है कि अगर यासिर अभी बैटिंग कर रहे हैं, साथ उसके वो भी हैं, अब्बास भी हैं, अगर 30-35 रन और ऊपर करके तो ये एक अच्छा प्रेशर बिल्ट अप हो जाएगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि चौथी इनिंग्स में अगर 200 भी करना पड़े
अगर आप अच्छी बॉलिंग डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करें जिस तरह की हमारी लड़कों ने पहली इनिंग्स में की है तो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है अल्लाह के घर कि हम ये टेस्ट में जीत सकेंगे. Just wondered, Ben Stokes started the game with an injury and with a duck. He's then sort of elbowed his way into the game this evening. Are you guys a little bit wary of Ben Stokes in a fourth innings chase? Look, he's a good player on a good occasions, but we have to remember our strength. We don't have to focus too much on opposition strength. So I think if our bowlers bowl well, the way of they bowl well in first innings, and we filled it well, I think if you bowl consistently good overs, I believe that you can get any batsman out. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.